everyone, welcome back. It's Jojo. What's up? Okay, Jokhay. Oh, that rhymed. Jokhay has dropped an EP just out of the blue. Nobody is expecting it. He does this all the time, no? What is this key? No, nothing, no announcement, no hint, nothing. Just random given day. So it has happened. And I know that I've missed his EP with JJ. A lot of you have requested that. And his other song with Ali Marke also was on my list. So I'll get to that also. But I was like, this is just fresh. This is absolute fresh. It is like a day old. So I'm gonna get to this first and I'll just cover all three songs. Because I'm super curious and I feel like I haven't been able to get to a lot of his music lately. So let me just finish this now. And it's gonna begin with the first track. Oh, it's called Day Before Yesterday. Parso. And it's got three artists. It's got Shareh, it's got Umer, and Haaezii and JJ in the last track, you know. So okay, we'll start with Giving In. And let's see what's happening. Written and performed by Shareh, produced by Jokhay. I'm just wondering, what is the scene? It's nice, no, that he's constantly making music with all these artists. I love it. Okay, chalo. Giving In. 1, 2, 3, play. What city is this? Japan. खड़े हाथ लेके खाली हम कभी फुर्सत से देखो तो मैंने पाया है खो के सब कभी फुर्सत से मिलो तो बताएंगे दास्ता तुझे तू लगे मेरे गले कैसे रास्ते खोले पर समझा ना सके ये भूल है हमारी बता ना सके तुम ही खास थे फिरे ना हम बात से होती थी आसानी काफी सारी जब तुम साथ थे बिछड़ने पे मजबूर जमाने के हम हाथ से तुम लिख देना इस तख्ती पे के आशिक थे इस नाम के थोड़े थे मजाइया बड़े खुश मिजाज से लेकिन जब भी लिखते थे तो बेहद ना हिसाब से कितनी थी कहानी कितनी असर उनके हाथ से तभी है ये गाने इस मरूम की किताब से मुझे याद तुझसे पहली मुलाकात भी क्या तुम जानती कि जलता तुझसे चांद भी क्योंकि हम तारीफों के पुल बांधे जब भी तुझसे करे बात हर राग हर रात नाम की वो थी छोटी तसल्ली या नीयत में खोट वो साकी है गए तब से सूखे हैं होड़ कोई हाथ ही न था मैं इस बात का अफसोस ये जाम रहे खाली इंतजार करे रोज किसी जानिब यूं ही चल पड़े हम मीलों दूर कितने ख्वाब मैंने देखे थे वो सब गए टूट उम्मीद क्या लगाएं अब बेजान सी ही हो गई ये रूह तुझे जानते सब वाकिफ हैं अब तुम ही से सुख है और तुमसे सुकून और तुम ही को पाके मैं खुद से जुड़ूं मैं अब क्या करूं मोहब्बत का हमने भी रखा जुनून समंदर गम में जो गए डूब तो अब क्या करूं मैं अब क्या करूं बता मुझे पहले ठीक थे अब तुम क्या हुए खफा हुए मरहूम को मरहम से क्या नफा हुए मेरी चाह हुए न चाहते हुए भी तुम यूं खफा हुए सजा हुए मनाए तुझे कैसे ये बताओ मुझे तेरे बिन अब जीना भी मुझे अजाब लगे बेहिसाब तुझे चाहा यूं हिसाब ना ले बेअसर मुझ पे चीज़ें कोई एहसास ना है काफ़ी दिल से तुझ पर लिखता तो मजाक ना ले कैसी तकलीफ़ों से गुजरे जाना हम तुम ना कोई हम सफ़र ना कोई ठिकाना पर तुम मेरी दिल लगी मेरा परवाना सब तुम जाना भी अब लगे अनजाना प्रखर तुम पर तू देखती नहीं तू देखती रही तू देखती सही हमें की सही हो तुमसे नूर लेकिन तू जो अब साथ ही नहीं वो बात ही नहीं काटी गई वो रात गई मैं खुद से दूर अब तुम ही से सुख है और तुमसे सुकून और तुम ही को पाके मैं खुद से जुड़ूं मैं अब क्या करूं मोहब्बत का हमने भी रखा जुनून समंदर गम में जो गए डूब तो अब क्या करूं
Man, what is Shareh doing with his writing? What is he doing? This one really hit me in the feels and how. And I have to say, like the वो echo sort of दूसरे room से या whatever that effect डाल के the drums, it sounded like those big drums, na? That which was happening in the back throughout the song was just giving it this other mood altogether. It was just wow. It was just wow. I was like, I can just go on a long walk with this song on loop. So beautiful. So beautiful. And even like everything, the melody, the keys, the entire like arrangement. And I feel like one of the best, um, this is one of Shareh's best. Yeah, for sure. This is one of Shareh's best that I've heard. And I literally while I was listening and my eyes, I felt like I need to go on a long walk in the evening with this song today. And I probably will tonight. I usually go for a walk after dinner and I'm gonna have this song on loop. It's so freaking good. So yeah, I'm gonna go over the lyrics. I was trying to read them from the second half of the song onwards, but the entire song just so beautiful. What are these thoughts? I feel like and they work together so much, so much. Like right from the start, I've heard Shareh, team up with Jokhay. Um, this writing is just on another level. It's just like how you kind of uh and it makes me wonder, when you're working with the same people sort of over and over, do they does that contribute to, both your artistry sort of growing, or are you just growing separately in your own zones and then you come back and it just makes me wonder those thoughts. Yeah, this is just such a beautiful, beautiful base that Jokhe laid out, and he did full justice to the music arrangement. So good. So and there were so many variations that kept happening through the song. Iska structure I was seeing because it started with I think a verse itself, then it went into some kind of then it went into the hook, then another verse, then it went into the hook again. But I'm just saying अब तुमसे ही कहीं पे तो एक कोई ब्रिज टाइप थिंग था. हाँ, वो हुक से पहले वाला पार्ट, देखती रही, तू देखती सही, that bit. Anyway, I'm gonna read the entire thing. Thank you for pinning the lyrics, it really helps. ख खड़े हाथ खाली लेके हम, कभी फुर्सत से देखो तो, मैंने पाया है खो के सब, कभी फुर्सत से मिलो तो. ओह, right here. बताएंगे दास्तां तुझे, तू लगे मेरे गले, कैसे रास्ते खुले. पर समझा ना सके ये भूल है हमारी बता ना सके. तुम ही खास थे, फिरे ना हम बात से, होती थी आसानी काफ़ी सारी, जब तुम साथ थे. ओहो! बिछड़ने पे मजबूर ज़माने के हम हाथ से, तुम लिख देना इस तख्ती पे कि आशिक़ थे इस नाम के. थोड़े थे मज़ाहिया बड़े खुश मिज़ाज से, सो इट्स मिज़ाज, बड़े खुश मिज़ाज से, लेकिन जब भी लिखते थे तो बेहद नाहिसाब से. ओहो! कितनी थी कहानी कितने असल उनके हाथ से, तभी है ये गाने इस मरहूम की किताब से. उफ, ये बहुत टेलिंग यू इट्स माय फेवरेट शायरी वर्स आई थिंक. मुझे याद तो सॉन्ग आई मीन मुझे याद तुझसे पहली मुलाकात भी, क्या तुम जानती कि जलता तुझसे चांद भी, क्योंकि हम तारीफों के पुल बांधे जब भी तुझसे करें बात, हर रात नाम की. वो झूठी तसल्ली या नियत में खोट, वो साकी हैं गए तब से सूखे हैं होठ. कोई हाथ ही ना थामे इस बात का अफसोस, ये जाम रहे खाली इंतजार करे रोज. Damn, bro. किसी जानिब यूं ही चल पड़े हम मीलों दूर, कितने ख्वाब मैंने देखे थे वो सब गए टूट. उम्मीद क्या लगाए अब बेजान सी ही हो गई ये रूह, तुझे जानते सब वाकिफ हैं. हुक, अब तुम ही से सुख हैं और तुमसे सुकून, और तुम ही को पाके मैं खुद से जुड़ूं. मैं अब क्या करूं, मोहब्बत का हमने भी रखा जुनूं, समंदर ए गम में जो गए हैं डूब, तो अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं. Oh man, heart was sinking here. What is happening? So this whole like even the other reaction this week, I was wondering, कौन सा था? Let me see what song I reacted to. I think it was जानी का कभी नहीं.
And I was wondering this thought ki, what is it about your, what is it for men that they miss the most when, you know, their partner leaves? What is that one thing that a woman adds to your life that you miss the most when she's gone? I really want to know, because, you know, ऐसी lines पढ़ के I feel like asking, like, what is it, maybe the one, two, three things that you miss the most that you don't get with your boys, you know, with your guy friends and with the way you generally are in the world? What is that quality or that, you know, सुकून देने वाली या सुख देने वाली thing that the women bring into your life? I really want to know. So please comment below here also and tell me. Okay, then बता मुझे, पहले ठीक थे, अब तुम क्या हुए? खफा हुए, मरहूम को मरहम से क्या नफा हुए? मेरी चाह हुए, ना चाहते हुए भी तुम यूं खफा हुए, सजा हुए, मनाए तुझे कैसे ये बताओ मुझे? तेरे बिन अब मुझे जीना भी अजाब लगे, बेहिसाब तुझे चाहा, यूं हिसाब ना ले, बेअसर मुझ पे चीजें कोई एहसास ना है, काफी दिल से तुझ पे लिखता तो मजाक ना ले। मैन, सो हार्ट ब्रेकिंग। ये तो जा रहा है रोंदू प्लेलिस्ट पे फॉर श्योर। कैसी तकलीफों से गुजरे जाना हम तुम, ना कोई हमसफर ना कोई ठिकाना पर तुम, मेरी दिल लगी मेरा परवाना सब तुम, जाना भी अब लगे अनजाना पर घर तुम। ये लाइन, ये घर वाला वर्ड तो मेरे को हमेशा हिट करता है, जस्ट लव्ड इट। हाँ पे तू देखती नहीं, तू देखती रही, तू देखती सही, हम एक ही सही हो तुमसे नूर, लेकिन तू जो अब साथ ही नहीं, वो बात ही नहीं, नहीं काटी गई वो रातें कहीं मैं खुद से दूर। और I find it so amazing how Jokhay produces all these um, different sonicscapes, and his production never sounds like you can't classify it into a genre. You know, if you just remove the lyrics and the vocals also and just keep the music there, how would you classify it? You can't. It's so niche yet universal yet like, I don't know, but it's it's masterful what he does every time. Okay, let's go to the next song. ये बहुत emotional कर दिया first song ने. After my voice is getting strained, so I might just stop recording after this EP का reaction, and then I might take a few days का break. Abhi I was sending a voice note to Shruti, and my voice was cracking. It's like, what? Okay, second track, written and performed by Umer Anjum. चलो, No Reconcile. So ये पूरी EP इस zone में है क्या, romantic heartbreak वाले zone में? Oh, यहाँ पे lyrics pinned है. Very nice. I like it when this happens. चलो, 1, 2, 3, play. नहीं सोचा था कभी मैं होऊंगा या माइक पे, नाउ दैट आई एम हियर सजेस्ट तू अब साइड पे, कितने यहाँ पल रहे हैं कितनों की हाइप पे, बंद हो गए लौंडे नहीं उठे वो टाइम पे, सबक के नहीं लाइक तुम बनते जेहादी जख्म के नहीं लाइक, वो मांगे फीचर क्या कलम के वो लाइक, तुम ले लो चैनल आई डू इट फॉर लाइक्स, मैं बन चुका क्या से क्या, हम वे इन इट तो आउट मुझे ना देखा रखता मैं सबर, जब भी जानूं आगे का छोड़ूं मैं लेगेसी, वक्त हो जब जाने का माने वो नहीं, कभी वक्त था यहाँ आने का मेरा, सुनता था इनकी अब नहीं रहा वो चेहरा, ना रहे वो खत ना रहा वो उम्र, बस कला दिमाग पे देती है पैरा, जोखे और मैं आगे जब साथ तो जोखे ऑन मैन, जो बन रहे थे रैपर्स यहाँ होके ऑल 10, वो हो चुके रैप अप है डब्बे में ज़ैन, they can't seem to find, जाएंगे खुद ही नीचे waiting for my mean decline, टीम को टाइम तेरी you know we don't wait in line, even the time when I'm down करूँ beat पे shine, धीमे जाएं बोले it's not people's type, fuck the people, नहीं सुनता मैं इनकी राय, गीत पे हाय लेकिन मिले तो स्ट्रीट पे शाय, seamless खाएं इन्हें चीर के no reconcile, मैं घूम रहा राउंड्स बस देखूं और हंसूं, look at these clowns, वो अरसे से चाहते थे गिरे हम मक्का फाते अमल comes back around, मैं घूम रहा राउंड्स बस देखूं और हंसूं, look at these clowns, वो अरसे से चाहते थे गिरे हम मक्का फाते अमल comes back around, comes back around, comes back around, they wanna kill me but don't wanna miss cause it comes back around, बंदा बातों से बनता नहीं, रखे तू बंदूक नहीं ये वो कंधा नहीं, takes a little while but they realize जो ये चाहते मुझसे मैं वो बंदा नहीं, around fake it for the gram truth be told, नहीं बुझती सोच है सुख भी रोज, वो खुद जीरो से चढ़े पर भूखे थे व्यूज की खोज में चुन ली मौत, मैं बैठा था चुप जब बातें थी बनी पर बातें मैं दूध, औकात तक बातें ही रही ना आगे, वो बड़ियां बोलेगी मेरी सिम्फनी जब बोलूं ना मैं कभी,
हाँ छोटे पीछे हो, पड़ते हेड शॉट्स लौंडे नीचे हो. You can guess कौन कीचे टांगे रीची ने ये मांगे ना गेम से सीखे हो. हाँ छोटे चलता बन, रुकावट नहीं रास्ता बन. वो घंटी बजाते रह गए जिनका उर्दू रैप इधर कलता कर. मैं घूम रहा राउंड्स, बस देखूं और हंसूं. Look at these clowns. वो अरसे से चाहते थे गिरे हम मक्का फाते अमल comes back around. मैं घूम रहा राउंड्स, बस देखूं और हंसूं. Look at these clowns. वो अरसे से चाहते थे गिरे हम मक्का फाते अमल comes back around. Comes back around. Comes back around. They wanna kill me but don't wanna miss cause it comes back around. Bro, what? What? Umer? What? I have got it right. I know it's Umer now. Listen, what has he been on for the past year or so? He is just knocking it out of the park in every single track. And that dry end was just, oh my God. एक तो इतने references और वो drop किए ना verses में. Forget all that. What was happening with the music? Jokhay. Can't. I can't. This was so good. And it was totally not what I thought it was going to be. Totally not. My God. Ooh, okay. ऐसा beautiful music arrangement सिर्फ जोखे कर सकते हैं. And Umer Anjum has come on this beat and he has, I mean, there needs to be another Jokhay or my series with him, right? So freaking good, man. So freaking good. All the different, and I just want to know what that whole thing which kept repeating through the track. Oh, it's just so good. I really want to sit with Jokhay and talk about his arrangements in all the songs. Like, what are the elements? What are these instruments he packs in, and what are the different, like, because even while it's going on in the back, you can hear like somewhere there's a crackle, somewhere there's like, I don't know, some kind of water sound happening somewhere. It's just so good. The all the textures that he adds into the final mix. Oof. Okay, and Umar, आप तो मतलब कहाँ ही जा रहे हो? Amazing. So did he didn't start with a yeah no this time, वरना मेरे को हो जाता वो pause moment. But his voice and his writing and his sort of structuring and the kind of things he's doing in the lines, very, you just can't, it's very difficult to not compare him to his brother, because of course the voice and tonality is similar. But even the aggression and the emotionality in the delivery of the lines is very like that. So, and it's not a bad thing, it's just, but he's still carving, I mean, he can't help but have the similar sound kind of voice, right? But the way he's doing his flow changes and his like schemes and even his writing, you can obviously still tell that's not going to go, that there's a lot of Talha and Krishna influence on him, but he is just carving his own lane. And how I love it, that whole, like, the way he delivered the hook also, and especially the end. Man, I had goosebumps with those last few lines. Just, I love it. The aggression in his voice is just another level. नहीं सोचा था कभी मैं होगा यहाँ mic पे. Now that I'm here, suggest तू अब side पे. Like this. Gonna use this. Now that I'm here, suggest तू अब side पे. कितने यहाँ पल रहे हैं, कितनों की hype पे, पर बंद हो गए लौंडे, नहीं उठे वो time पे. सबक के नहीं लायक तुम बनते थी, जख्म के नहीं लायक वो मांगे फीचर, क्या कलम के वो लायक तुम ले लो चैनल, आई डोंट डू इट फॉर लाइक्स. तुम ले लो चैनल मतलब his channel got taken or what, hacked, ऐसा कुछ हुआ था. I think I remember. I don't know. मैं बन चुका क्या से क्या, I'm way in it तो out मुझे ना दिखा. I'm way in it तो out मुझे ना दिखा, रखता मैं सबर जब भी जानूं आगे का, छोड़ू मैं लेगेसी वक्त हो जब जाने का. वो माने वो नहीं कभी वक्त था यहाँ आने का मेरा, सुनता था इनकी अब नहीं रहा वो चेहरा, ना रहे वो कट कट, ना रहा वो उम्र, बस कल्ला दिमाग पे देती है पहरा, बस कला दिमाग पे देती है पहरा. जोखे और मैं आ गए जब साथ, तो जोक है और मैन, जोक है और मैन, जब जो बन रहे थे रैपर्स यहाँ होके ऑल टैन, वो हो चुके रैप अप है डब्बे में जैन. Jokhay or May is a shout out to Tala. I feel wrap up is a shout out to Krishna. I could be wrong. They can't seem to find Jageh khud niche waiting for my mean decline.
टीम को टाइम तेरी, you know we don't wait in line. Even the time when I'm down करूँ beat पे shine. धीमे जाए बोले it's not people's type. तो people नहीं सुनता मैं इनकी राय. गीत पे हाय लेकिन मिली तो ये street पे shy. Seamless खाए इन्हें चीर के no reconcile. This whole section and the way he did. So good. So good. Hook times 2. मैं घूम रहा rounds बस देखूं और हंसूं. Look at these clowns. वो अरसे से चाहते थे गिरे हम. मकाफत अमल comes back around. Comes back around, comes back around. They want to kill me but don't want to mess because comes back around. And it ended with this dry part. It's so good. बंदा बातों से बनता नहीं, रखे तू बंदूक नहीं, ये वो कंधा नहीं. Takes a little while but they realize जो ये चाहते मुझसे मैं वो बंदा नहीं. I don't fake it for the gram. Truth be told नहीं बुझती सोच है सुख भी रोज. वो खुद जीरो से चढ़े पर भूखे थे व्यूज की खोज में चुन ली मौत. मैं बैठा था चुप जब बातें थी बनी पर बातें महदूद औकात तक बातें ही रही. What is महदूद? ना आगे वो बढ़ी यहाँ बोले कि मेरी सिम्फनी जब बोलूं ना मैं कभी. ओहो. हाँ छोटे पीछे हो पर पड़ते हेडशॉट्स लौंडे नीचे हो. यू गेस कौन खींचे टांगे रीच ही नहीं. ये मांगे ना गेम से सीखे हो. हाँ छोटे चलता बन रुकावट नहीं रास्ता बन. वो घंटी बजाते रह गए जिनके उर्दू रैप इधर कल था घर. ओहो. Bro, shots. It's really good. Oh my God. I loved it. This EP. Okay, so now we got, I mean, this guy, Umer, with everything he drops, he just keeps leveling up. You know? Loved it. So we had the heartbreak, we had no reconcile. Now let's see what Meanwhile is about. I don't, Haaezii, written and performed by Haaezii and JJ, produced by Jokhay. This is the last track. ठीक है, chalo, let's do it. Let's see where the last track is going to take us. 1, 2, 3, play. मुझे चैन से ना जीने देगी तू. मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं. मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं. हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में. आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में. खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के. कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी वादों के पक्के थे. हाथों में कट्टे थे वजन था इतना के झुके हुए कंधे थे. नजरें थी ऊपर और अकड़ में खड़े थे. उम्र से छोटे पर अकल से बड़े थे. हाथ से अनदेखे आंख से देखे तो पता चला दुनिया बहुत अजीब. जबान से गंदे और दिल से हो साफ तो दुनिया नहीं समझेगी ठीक. समझा मेरा कौन है कोई नहीं मैं तो जानू सब. मेरे चाचू मेरे मामू लगे चालू सब. दुश्मन के मन में झांकू बोलूं जाके व्हाट इज अप चौधरी साहब. बर्न करूं ब्रिज अक्सर लेता काफी रिस्क. रोता नहीं मैं रोजी को खुदा लिखे मेरा रिस्क. उसी से करूं मैं इश्क उसी से मांगू मैं सब. उसी से मांगा से स्केर्ड दे दो हेवन का टिकट. क्योंकि मुझे चैन से ना जीने देगी तू. मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं. मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं. हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में. आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में. खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के. कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे. फसाने भी याद है, हंसने हंसाने भी याद है, किए जो बहाने भी याद है, बाप के दिए हुए ताने भी याद है. मुझे मेरा पीना भी याद है, मुझे मेरे खाने भी याद है. लौटे खड़े मेरे लिए देर रात माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद हैं. हाथ पांव सर चलाते पर चलाते अब दिन भर चलाते. गाड़ियां भी देख अब हर चलाते. लौटे चुपचाप जिम्मेदार घर चलाते. तुम खाली खेतों में हल चलाते. हमें ठंडे शहरों में फर चलाते. तुम हारने से डरो तुम्हें डर चलाते. हम गैंगरा के साथ ये फखर चलाते. मची हुई हड़बड़ी है इनकी जल पड़ी है. हम सिर्फ नोट गिनते अपनी चल पड़ी है. थे जो पेड़ बोए सारे उनकी जड़ बड़ी है. फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता कुछ तो गड़बड़ी है. मुझे चैन से ना जीने देगी तू. मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं. मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं. हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में. आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में.
खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे. God damn, son. Oh. Okay, I have to be completely honest. When it started, I didn't love it. I love the music, but I wasn't vibing to Haaezii, I'm gonna call him. Haaezie's vocals, just because they're one new to me and they kind of sounded very, I don't know, raw in a way. And then as his verse progressed and the switches kept happening and he kept changing his flow and his like the lyrics as well, they were so fun. I was just by the time JJ's verse finished and he came back, I was actually happy he came back and he ended the track and I was vibing. Like I loved it. So he is brilliant. I mean, when you first listen to him, you might not love his voice. That's just, I'm just honestly saying it. But there is a certain sort of, what's the word? There's a certain like naughty twang that he's got. Which then you're like, okay, I think he's supposed to be in this zone. Where you're kind of it's a lighter zone. So it worked. It really worked. By the time the song ended, I was like, bro, who are you? And I have to say, JJ's pen game is as strong as I remember it. I mean, I have to cover his EP with Jokhay. I'll get to that next. But so good to hear him after so long. First of all, I always love his voice and just when he writes, his style of writing is so unique to him. You can never say that JJ writes like anyone else. It's just him, the way his schemes are and the way his lines are phrased. It just suits his voice and his delivery the way he writes. So it's just an absolute treat. I loved it. I'm not going to go over the lyrics because my voice is really feeling strained, but I was reading them while the song was on, and I have to say the music of this track was my favorite in all the three. But I feel like overall song mein the Shareh song was my favorite. Just for the poetry of it and the overall sort of impact of it. But I feel like is gaane ka music was such a vibe. And again, it's so difficult to classify Jokhay's music into any genre space. It's so difficult. You can take this music and you can give it to, I don't know, Asim Azhar, for example, or you can give it to Aima Beg, or you can give it to Hassan Rahim, and everyone will do something different on it, but everyone will be able to, like take a shot at it and do something in their spaces with it. It's so amazing. So yeah, I really want to sit down one day with Jokhay and talk about all the elements that he uses. And like this had a very like chill Latin vibe also in it, probably because of the 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 guitars. But it really took me to a lot of those the very pop / alternative pop spaces that are very prominent in South American music, which is just on a lighter, fun note, and it's a very vibey sort of. It's almost like busker music. So I loved. Love this EP. Kya different vibes. And this one, man, Haaezii, who is he? Please tell me more about him. And if there is other like music of his that I must get to. JJ, of course, is love him. We'll get to his EP with Jokhay soon enough. All the J's are so cool, I'm just saying. So yeah, loved it. Thank you guys for requesting this. Thank you, Jokhay, for dropping another gem out of the blue and treating everyone. Meanwhile, this call, I really loved it. Both just it's very hard to pick. Actually, even the Umer song is so good. I'm not being fair. Even the Umer song is so freaking good. Now that I'm thinking about it, it's a winner. All three tracks in their own unique spaces, so different from each other, and so good. I feel like they should all go on some playlists of mine. Abhi sirf Rondu hai, but yeah, love it. EP's a winner. That's it. On that note, let me know what else I should get to. DM me, tell me more about Haaezii for sure, and do hit those buttons. They really help the channel. Take care of yourselves. Live long and prosper. हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी